हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रविंदर सिंह। और आज हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज एच एस हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। हम हेमरेजिक सेप्टिसिमिया इज ए acute pasteurellosis caused by particular serotypes Pasteurella multicida, and it is manifested by the acute and highly fatal septicemia, principally in cattle and water buffalo. And it causes follicular disease in fowl, the same animals, and HS occur infrequently in swine and less commonly in sheep and goats. It has reported in bisons, camels, elephant, and horse, sometime in donkey. There is evidence of occurrence in yolk also. In the laboratory conditions, it's diabetal mice is highly susceptible to accidental infection. तो organism होता है वो normally we can say the normally inhabitant of this organism is tonsillar and nasopharyngeal region. Nasopharyngeal region में ये organism stay करता है and it does not make any longer outside in the soil. ये ज़्यादा environment में ज़्यादा stable नहीं होता. तो although इसमें at any stage of time of years the roast epidemics occurs during the rainy seasons. वैसे तो ये पूरे साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ रेनी सीजन में ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं. एंड द etiology of this disease is Pasteurella multicida is a gram-negative non-motile bipolar staining Coccobacilli organisms, and it has two serotypes, Pasteurella multicida and designated B2 and E2. The serotype E2 has been recovered only in Africa, and B2 cause disease everywhere throughout the globe. Next is transmissions. Transmissions is infection is generally direct and indirect contact, and natural infection is occur by the ingestion and inhalations. The source of infective bacteria is thought to be nasopharynx, bovine bacterial carriers, and animals become susceptible to this result of various stress. And initiation scenes in cattle and water buffalo at the beginning of the rainy seasons, transportations, fatigues, and overload are predisposing factors. At the initial site of proliferation of these throughout the tonsillar regions, the susceptible animals septicemia develops rapidly, and that due to endotoxemia result in 8 to 24 hours after the first sign of sin. बेसिकली सिम्टम्स आने की 8 से 24 घंटे के बाद एनिमल की डेथ हो जाती है, एंड एक्सोटॉक्सिन्स हैव बीन demonstrated in blood circulations. And the clinical finding are incubation period are 2 to 5 days, and in most cases the acute and peracute resulting in death of within 8 to 24 hours after onsets. And because of the course is two sorts, and the clinical signs may be easily to be overlooked. The animal first sign dullness, there is reluctance of it to move, fear, starvation, and serious nasal discharge. There is edematous swelling, there is mucous membrane are congested. तो ये कुछ साइन होती हैं. इसमें रीजन की बात करें तो द मोस्ट ऑब्वियस चेंज इन द अफेक्टेड एनिमल्स आर टू बी एडिमा. देयर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हेमरेज एंड जनरल hyperemia. In most of cases, there is too edematous swelling in the head, neck, and distal regions, and there is well to clear the extra-colored serous fluids, and edema is also seen in the musculature, and subserous petechium hemorrhage is also seen, and there is hemorrhage is found throughout the body, and there is hemorrhage on the serous surface, including the pleura, peritoneum, and pericardium, along with the trachea, and hemorrhagic gastroenteritis and presence of hemorrhagic fluid in the serous cavity. Fibrous exudate is may be present in the serous surface. So these are the cattle and buffalo having the symptoms of हेमरेजिक सेप्टिसिमिया. तो इसमें क्या है, मुंह खोल के सांस ले रहा है एनिमल्स, ओपन माउथ ब्रीथिंग इज प्रेजेंट. देयर इज एक्चुअली वो सिम्टम्स है बहुत कम टाइम के लिए आता है, 8 से 24 घंटे के बाद एनिमल की डेथ आती है. लेकिन बेसिकली जो नेजोफेरेंजियल रीजन है वहाँ पे एक्जुडेट है भर जाता है, जिसके कारण एनिमल को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. एंड आफ्टर द पोस्टमार्टम देयर इज सेवरल हेमरेजेस सीन इन वेरियस ऑर्गन इन द बॉडी की डिफरेंट पार्ट पे हेमरेज होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, and it can lead to hypoxia and death of the affected animals. अगर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की बात करें, दी फाइब्रिनस न्यूमोनिया मिलेगा इसको, फाइब्रिनस टाइप का,
And addition is there is congestion of hemorrhages and infiltration of leukocytes, particularly neutrophil and some macrophages between the fibrin, leading to thickening of the interlobular septa. There is an enlargement of mediastinal and bronchial lymph nodes. डायग्नोसिस की बात करें तो हम प्रेजेंट डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ, अगर वो जो बैक्टीरिया है उसको हम आइसोलेट करेंगे और ग्रो करवाएंगे और वो उसकी स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करेंगे. बट बायोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो द सबक्यूटेनियस न्यूक्लियोसिस माइस एंड रैबिट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड एंड टिश्यू सस्पेंशन facilitate recovery of Pasteurella and pure, nearly pure culture. एक और होता है बासिलेरा हिमोलाइटी का, एंड बेसिकली इन काव एज यंग लैम्स ड्यू टू स्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूसिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है ये. इट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय सेप्टोकोकस एंड सुडोमोनास एंड वायरल एजेंट. सिम्टम्स होते हैं द अफेक्टेड काव आर डिप्रेस्ड एंड स्टैंड ऑफ dryness of muscles, there is copious mucopurulent nasal discharge, there is increased respiratory rate, there is lesion or edema, hemorrhages on the mucosa of upper respiratory tract, there is trachea is regional lymph node are swollen. These are two symptoms basically.